अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं शगुफ्ता रही हूँ कैशनल विंग सदर में आप सब लोगों को वेलकम करते हैं। सो गाइस, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग सी जो है वो एक एप्लीकेशन जो है वो डिज़ाइन करने जा रहे हैं जिसका नेम है बॉक्स शैडो जनरेटर। बहुत ईजी सी और बहुत सिंपल सा फैक्ट है। सो स्टे कनेक्टेड भी, वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले गाइस हम यहाँ पर 3 फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट वन आर द इंडेक्स डॉट एक्सटेंशन इज़ द HTML, सबको पता है। इसी के साथ साथ इंडेक्स डॉट CSS, एंड द थर्ड वन इज़ इंडेक्स डॉट JS, जो कि हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल होगी। ओके, सो आई हैव अ 3 फाइल्स राइट नाउ। इन तीनों फाइल्स को पहले एमिट टैग्स ओपन कर लेते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी साइन लगा के दैन एंटर करेंगे। यहाँ पर आपका सबको पता है HTML CSS का बाय डिफ़ॉल्ट टैग्स जो है वो प्रिंट हो जाता है। इसी के साथ व्हाट वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर, तो हम यहाँ पर जो चीज़ बनाने जा रहे हैं उसका एप्लीकेशन का नाम राइट डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पर गाइज हम लोग एक बॉक्स शैडो ऐप क्रिएट कर रहे हैं जो कि आप इजीली इंटरनेट के ऊपर इस एप्लीकेशन को अपलोड कर सकते हैं ब्राउज़र के अंदर। इसका नाम हम रख रहे हैं बॉक्स शैडो जनरेटर, लाइक दैट। सो यहाँ पर हमने जो सबसे पहले लिंक क्रिएट करना है। सो index.css relation for style sheet and then close it here। ठीक है जी। इसी के साथ साथ गाइस वी आर गोइंग टू मेक एन अदर लिंक। मैं इसको बॉटम पे ले जाऊंगी एंड देन वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर द स्क्रिप्ट लिंक, जो कि आप सबको पता है, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट का सोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल का नेम index.js रखा है। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट। यहाँ पर एट दैट टाइम मेरी तीनों फाइल्स आपस में इंटरलिंक हो चुकी हैं और अब हम कुछ क्लासेस क्रिएट करेंगे। सो बैक ऑन द बॉडी और यहाँ पर आकर वी आर गोइंग टू टेक हियर द कंटेनर क्लास। ओके, कंटेनर क्लास के अंदर गाइस वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर, इट्स नेम इज़ द रैपर। मैं साथ साथ इसका प्रीव्यू भी डिस्प्ले कर देती हूँ ताकि यू कैन गेट द आइडिया व्हाट वी आर गोइंग टू क्रिएट। यहाँ पर हमारा प्रीव्यू जनरेट होता रहेगा, साथ साथ थोड़ा सा इसको डिक्रीज़ कर देती हूँ ताकि कोड आपको ईजिली जो है वो डिस्प्ले हो जाए। इसी के साथ गाइस वी आर गोइंग टू क्रिएट इन द रैपर। सो रैपर के अंदर हम यहाँ पर एक आईडी क्रिएट कर देते हैं बॉक्स की। ओके, सो लाइक दैट। सो इस बॉक्स के अंदर, बल्कि हम इस बॉक्स से बाहर आ जाते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर द स्लाइडर क्लास। स्लाइडर क्लास के अंदर हम यहाँ पर कुछ रेंज डिसाइड करेंगे। सबसे पहले इनपुट टाइप रेंज, ठीक है जी। मुझे कुछ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए रेंज चाहिए। आईडी का नेम मैं रख देती हूँ स्लाइडर 1, जिससे हम इसको चेंज कर सकते हैं। वैल्यू को फ़िलहाल 0 रखेंगे एंड देन मिनिमम एट्रीब्यूट के अंदर हम यहाँ पर -5 ऐड कर देते हैं। और इसी के साथ वी आर गोइंग टू ऐड हियर द मैक्सिमम इन दी +5, ठीक है जी। सो वैल्यू को यहाँ पर क्लोज़ कर देते हैं। इसी तरीके से इसी कोड को जस्ट यू कैन कॉपी फर्स्ट एंड देन पेस्ट इट हियर। जितने स्लाइडर्स आपको चाहिए आप उतने ले सकते हैं। मैं यहाँ पर जस्ट रेंज चेंज करूँगी इसकी। सो आई जस्ट चेंज हियर द रेंज। ओके, सो यहाँ पर मैं 0 कर देती हूँ, 0 से स्टार्ट होगा। वैल्यू मैं जस्ट यहाँ पर 10 रखूँगी
और स्लाइडर के नेम ऑब्वियसली आपने चेंज करने हैं ताकि यू कैन ईजिली इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट सम चेंजेस आसानी से आप स्लाइडर को उनके नेम से कॉल कर सकें। ठीक है जी। सो इसी के साथ साथ मैं इस स्लाइडर के डिव से बाहर आ जाऊँगी एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड हियर एन अदर आईडी। सो आउटपुट कोड इसका नाम रख देते हैं। बहुत इजी सी एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए आप इजीली जो है वो एक क्राइटेरिया क्रिएट कर सकते हैं। इनपुट टाइप tags, then implement here the id। so id का नेम मैं css code रख देती हूँ। then it can easily recalling if you are working on the css। ठीक है। तो यहाँ पर so I also check the button here, move on the id and I just write it here the copy name। और यहाँ पर बटन के नेम पे मैं जस्ट कॉपी, आप डिस्प्ले देख रहे होंगे इस तरीके से आपका डिस्प्ले बनना शुरू हो गया है। ठीक है जी। एंड देन अगैन आउट फ्रॉम दिस डिव वी आर गोइंग टू टेक केयर। मुझे यहाँ पर कुछ कलर्स चाहिए होंगे तो मैं यहाँ पर कलर की क्लास बना लेती हूँ। ओके ठीक है जी। इसी के साथ टेक हियर इनपुट टाइप वी आर गोइंग टू टेक हियर द कलर आईडी। सो हम यहाँ पर शैडो जो भी शैडो बॉक्स बनाएंगे, जो भी कलर उसका रिक्वायर्ड करेंगे, यू शुड नीड टू राइट इट हियर एंड देन क्लोज दिस। ठीक है जी। सो यहाँ पर शैडो कलर कंप्लीट हो गया। दैन यू कैन बैक इट आउट। गाइस अब मैं यहाँ पर तीनों डिव से बाहर आ जाऊँगी एंड दैन यहाँ पर मेरा कोड जो है वो फिनिश हो गया है जस्ट HTML का। ठीक है। तो अब हम आते हैं बैक आर CSS और CSS पर हम वर्क करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल सेटिंग इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि सॉरी आई जस्ट पुट इट हियर ऑल सेटिंग साइन। यहाँ पर सबसे पहले गाइस मैं लेफ़्ट को कर दूँगी 0 एंड देन आई ऑल्सो टॉप इट्स 0। इसी के साथ साथ मूव ऑन दी बॉडी। सो डिस्प्ले को कर देंगे ग्रिड। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द प्लेस आइटम in a center। Okay, move on the next class is the container। देखिए हमने CSS एक्सटेंशंस की भी होती हैं तो उससे कितनी हेल्पफुल रहता है कि आपके पास आपकी CSS क्लासेस HTML क्लासेस ऑटोमेटिकली रिकॉल हो रही हैं। तो इट्स अ वेरी ईजीएस्ट मेथड। प्लेस आइटम ऑल्सो टेक इन अ सेंटर। After that we are going to implement the background, it's white, and then implement here the width is 98, view width। इसी के साथ we are going to implement here the height is 80 view height। ठीक है। Move on the next, implement here the box, the background white, maximum width is 80%। after that implement here the height is 20 rem। after that implement here the box shadow। so box shadow के लिए 5px 4 positions के हवाले से implement here the 10px।
and then 2px implement here. Okay, move on the next. Just look like that. देख सकते हैं आप ये बॉक्स शैडो बन गया है, ठीक है ना। इसी के साथ implement here okay, margin bottom ले लेते हैं 10%. So implement here the border radius is 0. Take it here the margin top. I think I just take here margin bottom मैंने ले लिया I think. Okay, I just take it here. So border radius को मैं 10px कर देती हूँ. ठीक है जी, I just take here the 10px. So after that we are going to implement the next setting after the box. So box के बाद गए हम CSS कोड की हमने एक ID ली थी. So implement here the width is 40%. You can see in the display easily. So implement here the padding 10px. After that we are going to implement here the border radius is 0, and then margin top is 20px. After implement the border is none, and then border bottom, here is the border bottom, it's 1px, and then implement here the solid. If you never provide the color, क्योंकि color obviously हम decide करेंगे. Then implement here the shadow color. So width we are going to take here 70%. Border obviously नहीं होगा, so we are going to take here the none property, and then we are also check the margin top is 20px. ठीक है जी. After that implement here another ID as a copy. So the background color is transparent, border is none. So implement here again border 1px, then solid, and in a black. So we are going to take here the padding is 10px as well as 20px, and then you can take here the cursor become a pointer. So after that guys, we are going to implement here the font weight is bold, and then implement here the transition is 0.5 seconds and ease effect. ठीक है. Move on the next. Implement here the copy and then hover effect. So we are going to implement here the background color is crescents. Okay. Font color we are going to take here just white. And then implement here the border. There's none. When you are take the hover mouse, ठीक है, अभी नहीं दिखेगा, जब आप hover लेकर जाते हैं then it's working in a proper way. ठीक है जी. यहाँ तक देखिए कुछ इस तरीके से हमारा जो है वो डिस्प्ले आपके सामने बन चुका है. देखें होवर इफेक्ट ऑन दी कॉपी बटन. अब ये विड्थ बढ़ाना चाहें तो डिपेंड ऑन यू.
So here is तो ये हमारी एप्लीकेशन का डिस्प्ले है आपके सामने. सो गाइज अब हम आते हैं जावास्क्रिप्ट पे एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द जावास्क्रिप्ट. अच्छा, जावास्क्रिप्ट पे जो क्लासेस कॉल करेंगे बी फ्रैंकली फोकस ऑन. सबसे पहले स्लाइडर्स हैं हमारे पास. लेट स्लाइडर्स. अच्छा, अब यहाँ पर डिस्प्ले की नीड नहीं है, सो आई जस्ट क्लोज द डिस्प्ले ताकि एक फोकस ऑन वर्क. स्लाइडर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट dot query selector. I just check here query selector all and then implement here the input type. हमारे पास जो range थी गाइस हम उसको ले लेंगे. large bracket open कर लीजिएगा and then you can write it here the type equals to जो भी आपने वहाँ पर रेंज ली है you should need to call it here. तो आपने इस तरीके से इसको पूरे स्टेटमेंट को क्लोज करना. मूव ऑन दी नेक्स्ट. अगेन लेट कलर्स. सो लेट कलर्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट dot query selector all. And again you are going to implement here the input. Same procedure you should need to write the type equals to quoted. क्लोज कर देते हैं इसको. और यहाँ पर कलर का हमने एक एट्रीब्यूट क्रिएट किया है. सेम प्रोसीजर प्रॉपर वे में इसके जो है भी आप ओपन कर रहे हैं ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स, कॉमास, तो बिल्कुल वैसे ही यू शुड नीड टू क्लोज. अदरवाइज़ आपको फिर मसला होगा कि प्रोग्रामिंग रन नहीं करेगी, आपका जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर है वो वर्क नहीं करेगा. ओके, मूव ऑन दी नेक्स्ट. इट्स अ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. सो हमने आईडी से कॉल किया था एंड यहाँ पर हमारे पास रिमेंबर हमारे पास CSS कोड के नाम से वी आर गोइंग टू क्रिएट. नाउ क्लोज इट हेयर अगैन. अब हम आते हैं बटन पे. लेट btn कॉपी. सो यहाँ पर हम कैमल मेथड दे देते हैं. btn copy. Okay, move on the next. Here is the document dot get element by id and then we are going to close it here. Copy and close. ठीक है जी, हमारे 4 प्रोसीजर डिज़ाइन हो गए. So now guys, start the procedure. First one is the sliders. We are going to implement here the loop for each. Sliders इसको बिल्कुल एंड में ले जाएंगे and then we are going to open it here the curly brackets. So implement here the sliders dot add event list. Implement here the input. So comma then create box. So use this method, it's helpful to create a box. Move on the next. So back on the procedure, out from this. Okay, next पर आते हैं. अब next हमारे पास colors था. then again for each, so यहाँ पर you should need to call here the colors. after that bottom पे ले जाएं. greater than equals to. Okay, now we are going to write it here again. colors dot
color dot add event listener. Let me check. Here is the color indication. Why it's giving error? ठीक है. Input type equals to color. एवरीथिंग इज़ ओके. कलर पे एरर दे रहा है क्योंकि वैसे बाय डिफ़ॉल्ट कलर होता है और इसके अलावा मैंने यहाँ पर कलर्स दे दिया था. दैट्स व्हाई नाउ इट्स ओके. ठीक है जी. ऐड इवेंट लिस्टनर. नाउ वी आर गोइंग टू चेंज द कलर मेथड. तो वी शुड नीड हियर द चेंज प्रोसेस क्योंकि हम चाहते हैं कि कलर पे जब भी हो तो ऑटोमेटिकली कलर पिकर कलर को चेंज कर दें. inside this and then again create here is again create box. ठीक है जी. Now close this method and again we are going to implement this terminator sign. Okay guys, move on the next. I just put here the space ताकि कोडिंग जो है वो ऑब्वियसली हमारी इंटरलिंक नहीं हो. सो btn copy dot add event listeners. तो यहाँ पर जो प्रोसीजर देंगे इज अ क्लिक प्रोसीजर. नॉट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर द माउस ओवर इफेक्ट नथिंग. हम यहाँ पर ये प्रोसीजर इम्प्लीमेंट करेंगे. सो हियर इज कंप्लीट दिस एंड देन इसको बॉटम पे भेज देंगे and then implement here this bracket. So we are going to write it here again another procedure. So now guys we are going to implement again the next procedure. So here is output dot select so implement here the document dot execute command. Here is copy, implement here. Okay, now after that implement here the alert. So you should need to code copy. जो भी आप फॉर एग्जांपल आप जो भी बॉक्स शैडो में इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे ही कोड कॉपी पे क्लिक करेंगे तो फ़ौरन से जो भी कोड आपने या जो भी एसवीजी कोड या किसी भी साइट पे इम्प्लीमेंट करना होगा तो वो इजीली आपके पास कॉपी हो जाएगा. ओके, मूव ऑन दी नेक्स्ट. हियर इज़ द फंक्शंस. अब हमने क्रिएट बुक का एक प्रोसीजर बनाया था. देन वी आर गोइंग टू कॉल इट हेयर क्रिएट बॉक्स का. सो हेयर इज कॉल दिस फंक्शन. सो यहाँ पर लेट एक्स इक्वल्स टू sliders. We are going to move it here the array dot value okay. इसी के साथ again move on the next on the y axis let y equals to sliders one dot value. So let not the method. Okay, so move on the next. Let blue blur radius equals to sliders 2
dot value. Move on the next. Let spread shadow, जो कि हमारा shadow बन के indicate होगा. Then implement here these sliders 3 dot value. Move on the next. Here is another. Let shadow box shadow color equals to colors dot value. After that, implement here the let box shadow equals to. So यहाँ पर जो प्रोसीजर लिख रहे हैं, you should need to see in a very effective method. डॉलर जो वैल्यू हमने दी थी x एक्सेस भी वैल्यू होगी, वो इसके हिसाब से पिक्सल्स के अंदर सेट हो जाएगी. इसी के साथ let another value is on y, वो भी ऑब्वियसली पिक्सल्स के अंदर एडजस्ट हो गई. इनफैक्ट जो भी दिया जाएगा डॉलर. here is the blur radius. तो ये सारी वैल्यूज़ जब आप कॉपी करेंगे तो उसके अंदर ही है शैडो रेडियस. ठीक है, तो ये सारी वैल्यू इसके अंदर कॉल हो जाएंगी. shadow color. So now you can close this. So simple guys, another method begin कर लेते हैं. Here is document dot get element by id. So here is coded में आपने box write down करना है and then close this statement dot style dot css tags. So equals to box shadow. Put here the values again dollar box shadow. इसी के अंदर रहते हुए डॉलर implement here the box color. Sorry, here is the shadow color. ठीक है गाइस, यहाँ पर अब हम इसका सिंपल आउटपुट डिस्प्ले कर देते हैं. सो आउटपुट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू बॉक्स शैडो So again, you never forget to open this. Inside this sign, implement here the value. Here is the box shadow. Okay, now here is simple. अब इस प्रोसीजर को कॉल करा लेते हैं. देन जब तक कॉल नहीं कराएंगे तो ये फंक्शन जो है वो ऑब्वियसली रन नहीं होगा. सो नाउ शेयर द फाइनल रिजल्ट विद यू गाइस.
बैक ऑन द फाइल हमारे पास इसको रिवल करते हैं, डबल क्लिक करके। नाउ यू कैन सी यहाँ पर फ़िलहाल 0010 px है, ठीक है। जैसे ही हम इंक्रीज़ करेंगे इनके रेडियस, ये देखें इसकी वैल्यू चेंज हो रही है 4 to 5। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी मैक्सिमम कितनी मिनिमम आपने रखी है, डिपेंड हो रही है। आई जस्ट वांट टू चेंज द कलर, तो आई जस्ट क्लिक ऑन एंड आई जस्ट टेक एन अदर कलर। तो मैंने यहाँ से कोई भी कलर, नाउ आई जस्ट टेक दिस वन, लाइटर और डार्कर, यहाँ से भी ले सकते हैं। ओके करेंगे, ये कलर देख लें आप अपने हिसाब से। इस एप्लीकेशन का पिक्सल्स बढ़ाने हैं, कम करने हैं, जेड एक्सिस वाई एक्सिस पोजीशन से लेके जाना है और थिक करना है। दैन यहाँ पर सोर्स कोड आगे जैसे इसको कॉपी करें एंड देन आपकी ये सोर्स कोड कॉपी हो गया। इफ़ यू वांट टू पेस्ट एनी वेयर दैन यू कैन इजीली पेस्ट। दिस इज़ द वेरी अमेजिंग एंड इफेक्टिव मेथड इफ़ यू वांट टू क्रिएट एनी एप्लीकेशन। तो गाइज़ आई होप आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा। सो लाइक करना, शेयर करना, कुछ कमेंट पास करना मत भूलिएगा। वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अनदर इन्फॉर्मेटिव एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ। सो एप्लीकेशन बनाना बहुत ही ईजी है, इफेक्टिव है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।